Mr. Mrinal Chakraborty is a mental toughness trainer in sports arena for last 15 years. He is a specialized master trainer in NLP for the first time in Indian sport, which helped in the Indian hockey team winning the Junior World Cup hockey in 2016 after 16 years. He was in table tennis team as a mental toughness trainer for Commonwealth Games and Asian Games, also attached with the national archery team for the World Cup 2017. Currently, he is working with 10 sports people, those who had already qualified for the upcoming Olympic to be held in 2021. We welcome Mr. Mrinal Chakraborty. Mrinal sir. Thank you, and namaste. I'm feeling really privileged that Ministry of Sports and Sports Authority of India, as well as Parthoda and Monal sir and Swimming Association of India, give me the opportunity to share with you my views. I would like to request you all, if it is possible, please carry your, take your diary and pen, because everything is not in my slide. मैं जो भी बोलने वाला हूँ सब कुछ ये slide में नहीं रहेगा, क्योंकि I will give you so many different examples, and as per the examples हम लोग आगे जाएंगे. Slide 32 to 35 है. Intentionally मैं slide थोड़ा बड़ा करके रखा हूँ, क्योंकि if you ask me some question, immediately I can give you the reference. So the slide is this, and I would like to request तो सर, निकिता एंड मोनाल सर, अगर आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है तो जरूर ये स्लाइड हर कोचेस को शेयर करते हैं. आई हैव नो प्रॉब्लम. एंड फाइनली हम लोग का है ये सेशन का जो टाइमिंग है वो है 45 मिनट्स, राइट पार्थोदा, एम आई राइट? Yeah, Mr. Mrinal, it's 45 minutes and then question answers. And then question answer. So it's just 10:01. So before start my session, again, I would like to say thank you to you all. So first of all, is it possible for us to just close our eyes and just, can you hear the sound? Can we all? We can, I think so. So just close your eyes and imagine that we are in the, swimming arena. And people are shouting because the competition is going on. And we all know if the real competition is going on and if it is going in front of you, how you will feel. And in the meantime, you understand, yes, the moment when really we can own the gold medal in international arena, like Asian Games, like Common Games, like absolutely in Olympic. I know what is going inside you. मुझे पता है national anthem, Indian flag, as well as ऐसा sound आपको कैसे लगेगा. I know कि आज तक मैंने 15 years जो ये रिसर्च भी है, जो पढ़ाई बोलिए मैं ये किया हूँ, उससे पहले I want to introduce myself. I was a hockey player and I am fortunate in the product of SAI. So I am really privileged कि SAI ने फिर से मुझे मौका दिया as a expert आप लोगों का सामने आने का. 1989 to 93 I was the student of Kolkata SAI and वहाँ पे मेरा कोच था सरोज महांती, the great hockey coach, who is the coach of Dilip Tirke also. तो उसी टाइम 1989-93 I know about mental toughness, mental training. लेकिन उस टाइम इतना पॉपुलर नहीं था ये मेंटल ट्रेनिंग. लेकिन मुझे आज भी पता है सरोज महांती सर यूज्ड टू टोल्ड अस कि आप जितना टाइम प्रैक्टिस करते हो, सिमिलर टाइम आप या उससे ज्यादा टाइम आप अपना मन को सोचा करो कि आप जो करने जा रहे हो. तो जो बिगिनिंग था मेरा हॉस्टल करियर में, A1 से ये सरोज महांती सर मुझे बोला था. उस टाइम मुझे पता नहीं था ये मेंटल ट्रेनिंग क्या होता है, तो मैं सुनता था लेकिन अंदर में वो रेजिस्ट नहीं कर पाते थे. लेकिन एक दिन ऐसा ही हुआ कि उन्होंने आफ्टर प्रैक्टिस सबको ग्राउंड में बोला जस्ट रिलैक्स, ओपन योर शूज, हम लोगों को सुला दिया और उन्होंने अचानक नेशनल एंथम का वॉइस बजाया और उसके साथ धीरे धीरे वो कुछ बोल रहे थे. आज भी पता है
we are 23 over there, and we are crying. And after opening, our eyes, we are feel just like we achieved the international gold medal in international arena. और तब से मुझे इंटरेस्ट लगा व्हाट इज मेंटल टफनेस, ये क्या है. फिर मैंने कलकत्ता में रीना कौल मैडम है, रीना कौल मैडम के पास में जाता था और उनसे भी लर्न करने का कोशिश करता था ये एक्चुअल है क्या. एंड द डे वन ये मेरा दिमाग में चला गया. जब मैं एज ए हॉकी प्लेयर आई वाज प्ले फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्ले द स्टेट लेवल्स आल्सो, एंड आई एम सिलेक्टेड फॉर नेशनल टूर्नामेंट्स आल्सो, बट मेरा लिगामेंट कार्टिलेज इंजर्ड हो. एंड देन someone came in my guru, and that guru told me that, do you know what you don't know? The same thing come. I say, I don't know what I don't know. Then he asked me, I know what you don't know. Now the question is, क्या तुम जानना चाहोगे तुम्हें क्या पता नहीं है? मैंने बोला हाँ. And तब उन्होंने गाइड किया कि तुम मेंटल टफनेस, माइंडसेट, मोटिवेशन ये सब लेकर पढ़ाई करो जो इंडियन स्पोर्ट्स में बहुत जरूरी है. और मोहंती सर ने मुझे बोला था, मृणाल स्पोर्ट्स को अगर छोड़ना है दिल से छोड़ना मत. फिजिकली तू छोड़ सकता है, दिल में स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना. एंड तब से मेरा मोटिवेशन उसी की तरफ गया. एंड धीरे धीरे मैं इसका ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, लंदन गया, कैम्ब्रिज गया, स्टडी किया, और उसी का एक्सपीरियंस मैंने सेम फार्मूला इंडियन हॉकी में 2016 में मैंने अप्लाई किया. 8 साल कोच हरिंदर सिंह सर थे, और यही म्यूजिक, यही विजुअलाइजेशन में एवरी डे हर प्लेयर को इंडिविजुअली अलग अलग करके सब मिलके हम किए थे. और उसके बाद 16 years, after 16 years we got the medal. So this is the small एक स्टोरी मैंने बताया. ऐसे मैं बहुत सारे टीम का साथ काम किया. Last 15 years I work with 12 different teams with different sports. And definitely आप लोगों को डिटेल्स बताने वाला हूँ. टाइम बहुत कम है, तो हम लोग सिस्टम में जाते हैं कि व्हाट इज मेंटल टफनेस एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन टुडे स्पोर्ट्स. यहाँ पे जो फोटो दिखाई दे रहा है, ऑल आर इंटरनेशनल प्लेयर. पे एकदम कॉर्नर में देखिए मैं किसी के साथ हैंडशेक कर रहा हूँ. वो लड़का नाम है अंकित मंडल. ये लड़का जब 8 साल उसका फोटोग्राफ तब का है. आज वो लड़का 15 साल हो चुका है और इंडिया नंबर 1 है. गोपीचंद एकेडमी में है बैडमिंटन प्लेयर. और वो 8 साल से मेरे पास मेंटल ट्रेनिंग लेता था, क्योंकि उस टाइम मैंने कल्याण सर जो कलकत्ता में है, कल्याण सर का गाइड में हर रोज बास्केटबॉल कोर्ट में जाते थे. तीर्थेश सर मुझे मौका दिया था बास्केटबॉल में, मैं हर दिन मेंटल टफनेस ट्रेनिंग हर बुधवार करते थे. तो उसी टाइम से ये लड़का मेरा मतलब वो ट्रेनिंग में आता था. आज की डेट में वो मैजिक जैसा इंडिया नंबर 1 है. आपको एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर में देखेंगे मेहुली है, जो सर है, जिसका गोली एक बार प्रैक्टिस टाइम में लग गया था बाहर में, मतलब ग्राउंड का बाहर किसी का लग गया था. तो न्यूज़पेपर बहुत नेगेटिव चर्चा हुआ था. लेकिन समहाउ उसने मेरा पास कम्युनिकेट किया, और उसका बाद 2.5 साल उसका जर्नी ओलंपिक की तरफ ले गया. यूथ ओलंपिक में उसका मेडल है. ये छोड़ के मैंने सुरेश यादव को आप लोग जानते हैं, मुझे मौका मिला था सुरेश यादव को 2014, 15, 16 उसी टाइम में. मैंने पटियाला था पहले विद टेबल टेनिस टीम, और वहां से मैंने आया हॉकी के लिए. और उस टाइम आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड आई एम रियली थैंकफुल अबाउट प्रशांत कर्मकार. आई होप यू ऑल नो अबाउट प्रशांत कर्मकार. इज ए ग्रेट स्विमर. 2009 में भी मैं उनका साथ बात किया था कभी, उनका कंपटीशन था 2010 में भी, तो बातचीत होता रहता था. 2016 में जब सुरेश को लेकर प्रशांत ने आया था, तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, और जब भी मुझे मौका मिलता था मैं सुरेश के साथ बात करता था. आज के डेट में आप लोगों को पता है व्हाट इज सुरेश यादव एंड व्हाट ही इज डूइंग. ये सब बोलने का मतलब है मेंटल टफनेस आज की डेट में बहुत इंटीग्रल पार्ट है. मैं स्लाइड बाय स्लाइड प्रेजेंट करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि टाइम कम है, तो हम लोग और अंदर जाने वाले हैं. तो उसके लिए मैं आपको ये स्लाइड भेज दूंगा, मतलब कोचेस लोग भेज देंगे. हम डिटेल्स में जाते हैं थोड़ा बहुत. डिटेल्स क्या है? लेस इज मोर. अगर आप डिफरेंट वे में देखिए, ये कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है, अगर कोरोना को साइज देखिएगा कितना छोटा है, आंखों में नहीं दिखाई देता, लेकिन कितना पावरफुल है. द सेम गोज टू आवर माइंड. और अनकॉन्शियस माइंड इज लाइक दैट. आप विजिबली देख नहीं सकते, लेकिन वो इतना पावरफुल है, वो 6 फुट 7 फुट को भी गिरा सकता है, बॉक्सिंग में, स्विमिंग में, हर चीज में. लेकिन वो उसका पावर जो है वो समझने के लिए वी शुड नो अबाउट व्हाट इज लेस एंड व्हाट इज मोर. और लेस मतलब क्या है, कभी बहुत छोटा चीज भी बहुत बड़ा देते हैं. जैसे स्विमिंग में नॉर्मली आदमी क्या सोचते हैं कि लंबा होना जरूरी है,
नॉर्मली क्या सोचते हैं, फिजिकल फिटनेस का साथ टेक्निकली पूरा साउंड होना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो इग्नोर करते हैं वो है न्यूट्रिशन एज वेल एज स्पोर्ट्स साइंस, मतलब ये साइकोलॉजी, मोटिवेशन। टिपिकल एक होता है थ्योरी वाला साइकोलॉजी, आई एम सॉरी डोंट टेक इट अदर वे, एक होता है किताब वाला साइकोलॉजी, जो किताब में लिखा है वो एक्सप्लेनेशन, और एक होता है प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आई बिलीव इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिकॉज 25 इयर्स में हॉकी का खेला और लास्ट 15 इयर्स हो बड़ा डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ काम करके मेरा जो एक्सपीरियंस है भी मैं आप लोगों का साथ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोग देखेंगे, लिखा है कि मेंटल पावर में क्या होता है, रीपैटर्न करना पड़ता है। हर चीज का रीपैटर्न हो सकता है, जैसे सभी का अपना अपना पैटर्न है, जैसे आपका जो कोचिंग प्रोसीजर है वो आपका एक पैटर्न है, और वो पैटर्न को आप अगर चाहते हैं कि डिफरेंट लेवल में ले जाना, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कैन रीपैटर्न योर माइंडसेट, बिकॉज इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंडसेट। पहले का जो माइंडसेट है, से फॉर एग्जांपल क्लास 4 का माइंडसेट से आपका 4 का मैथ्स सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इफ यू वांट टू सॉल्व द मैथ्स ऑफ क्लास 12, सो यू नीड टू अपग्रेड दैट स्किल, और वो अपग्रेडेशन करने के लिए ये जो साइकिल है ये फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली मेरा जो रिसर्च है मैं देखा इंडिया में नॉर्मली लर्न का बाद रीलर्न आता है, मतलब हम लोग कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है हम लोग सोच लेते हैं पूरा ठीक है और कुछ सीख लेते हैं, और कोई किताब पढ़ा और कोई सेशन में गया, लेकिन उस बीच में एक वर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समटाइम वी नीड टू अनलर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलर्न? हम लोग कुछ सीखे हैं, लर्निंग किए हैं, लेकिन उसमें कभी कभी कुछ गलत चीज भी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे वैल्यू एडेड सर्विस होता है ना, कुछ प्रोडक्ट खरीदने से उसका साथ कुछ प्रोडक्ट आता है, या कोई फाइल डाउनलोड कीजिए मतलब लैपटॉप में, आप देखिएगा फाइल डाउनलोड के टाइम में जरूर समटाइम चैलेंजेस आता है, कुछ फाइल भी आ जाता है और वो सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं। द सेम थिंग हैपन व्हेन वी लर्न समथिंग, कोई चीज आ जाता है, क्योंकि हम लोगों का अपना सबका सोचने का पैटर्न है, और हम लोग जब कोई भी चीज एक्सेप्ट करते हैं हम लोग अपना पैटर्न में एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जो भी डिलीवरी दे रहे हैं और जो सुन रहे हैं वहां पे सबसे बड़ा अंतर आता है। उसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, इफ यू हैव अ व्हाइट पेपर, पॉसिबल होगा हम लोग एक गेम खेलते हैं, 30 सेकंड का गेम है, उसी से पता लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं, और उसका बाद आप जब स्टूडेंट को समझाते हैं कैसे वो पूरा डिफरेंट लेवल में चले जाते हैं। इफ इट इज पॉसिबल, कैन यू टेक अ व्हाइट पेपर, जस्ट अ व्हाइट पेपर, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेपर्स है, कोई भी एक छोटा पेपर ले लीजिए। सो 1 2 3 4 5 6 ले लिए होंगे, हाँ जरूर। तो अभी आप लोग अकेले ही हैं, सब जगह पे हैं, और कहीं पे अगर 2 या 4 पीपल एक ही कंप्यूटर की तरह देख रहे हैं, प्लीज डोंट प्ले दिस गेम टुगेदर। इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लोग डिफरेंट एंगल में देखिए, मेरा बात सुनते रहिए। सो पहले आपको क्या करना है, ये जो कागज आपने लिया है इसको दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, इधर उधर मत दे, जस्ट दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ 50% फोल्ड कीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ 50% फोल्ड कीजिए, और फोल्ड करने के बाद लेफ्ट हैंड कॉर्नर से आधा छोटा सा एक टुकड़ा फाड़ लीजिए, लेफ्ट कॉर्नर नीचे से आधा एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ लीजिए। अभी पेपर को राइट से लेफ्ट की तरफ फिर 50% फोल्ड कीजिए, राइट से लेफ्ट की तरफ, और राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड करने के बाद राइट हैंड अप, जो राइट हैंड अप है उसके ऊपर से फिर एक हाफ सर्कल के माफिक फाड़ लीजिए, जस्ट टेयर कर लीजिए। हो गया। अभी वही कागज को ऊपर नीचे फिर 50% फोल्ड कीजिए, ऊपर से नीचे 50% फोल्ड कीजिए, और फोल्ड करने के बाद जो राइट हैंड नीचे का कॉर्नर है, राइट हैंड का नीचे कॉर्नर, मतलब राइट हैंड का एकदम नीचे कॉर्नर है, वहां से फिर हाफ सर्कल फाड़ लीजिए। लिया आप लोगों ने? दैट्स ग्रेट। अभी सब लोग अपना पेपर को ओपन कीजिए। आई कैन गिव यू 110% एश्योरेंस। देखिए सभी का पेपर जो है, सभी का पेपर डिफरेंट है। अभी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे more than 550 people are watching this webinar, and I can give you 110% assurance किसी का साथ किसी का पेपर का मैचिंग नहीं है, 100% कंफर्मेशन है। क्यों नहीं मैचिंग है? क्या मैं गलत हूं? क्या आप गलत हैं? मुझे पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूं, क्या मैं गलत हूं, क्या आप गलत हैं, या मेरा बोलना गलत था,
या आपका समझना गलत था? ये क्वेश्चन था, रिप्लाई दे रहा हूं. Nobody is wrong. Everybody is right in their own perception. It's a game of perception. मतलब perception and maturity. मैं अपना maturity से कोई मैसेज भेजा और आपने क्या किया, अपना मैच्योरिटी से उसको इंटरप्रेट किया, आपका ब्रेन में आपने इंटरप्रेट किया और इंटरप्रिटेशन का बाद आपने उसको किया और करने का बाद देखिए पेपर का जो साइज एंड शेप है टोटली डिफरेंट है. ये में एक नेगेटिव पॉइंट था. क्या नेगेटिव पॉइंट? आपने सवाल पूछा नहीं या सवाल पूछने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला. रियल लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं. कोच कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं प्लेयर्स को कि घर में जाके पापा को ये बोलना, माँ को ये बोलना, में भी, और कोच प्लेयर को बोलते हैं आज ये ABCD ये करके लाना. नेक्स्ट डे कुछ जब सेम सवाल पूछते हैं, जब बच्चे लोग जाके पूछते हैं क्या तू समझा है, नॉर्मली प्लेयर क्या बोलता है, हाँ सर मैं समझ लिया. लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर जब आप यही सवाल पूछते हैं या उसको अपने करने बोलते हैं, वो गलत चीज करते हैं. आपने उसको दे दिया उसका रिकॉर्ड कि आपको ये एक्सरसाइज करना है, लेकिन वो हाँ बोलते हैं. 10 लड़का है, 10 लड़के आपको क्या बोला, हाँ सर मुझे समझ आया, लेकिन 10 लड़का देखिए 10 तरह से समझता है. तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यही परसेप्शन के लिए एक आदमी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकता और एक आदमी ऑर्डिनरी से पीक में जाता है. इट्स लाइक ए वर्चुअल पीक ऑफ एवरेस्ट. मेरा जो रोल है एज ए मेंटल टफनेस कोच, व्हाट आई डिड नॉर्मली, जस्ट लाइक ए तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलरी. यू ऑल नो अबाउट तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलरी, जो एवरेस्ट में फर्स्ट चढ़े थे. एवरेस्ट टॉप में पहुंचने के लिए एडमंड हिलरी बहुत बार कोशिश किया था, लेकिन नहीं हो पा रहा. तो किसी ने उसको किया, यू नीड वन गुड शेरपा जो आपको रास्ता दिखाएगा, और वही शेरपा का हेल्प लेके दोनों ने एवरेस्ट अचीव किया. सो मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ वो है लाइक तेंजिंग नोर्गे. प्लेयर का ड्रीम रहता है, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए काम रहता है उसको रास्ता दिखाना. सो मेरा जो रोल है वो एक्चुअली कोच यही करते हैं. इंडिया में अभी भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मोटिवेशन उतना पॉपुलर नहीं है, और अगर पॉपुलर है भी, ये कंट्रोवर्शियल है, बट डोंट टेक इट अदर वे. कोई मैं किसी को गलती नहीं बोल रहा हूँ, ये सिस्टम बोल रहा हूँ कि जब एक लड़का स्टार्ट करते हैं स्विमिंग, तब उसको पता नहीं है व्हाट इज मेंटल टफनेस, व्हाट इज मेंटल ट्रेनिंग. उसको खाली पता है उसको पानी में ऐसे 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 करते ही रहना, करते ही रहना, करते ही रहना, और कभी कभी रेस्ट लेना है, कभी कभी मसाज लेना है, कभी कभी स्ट्रेचिंग करना है. जब वो स्टेट लेवल आता है तब भी वैसे ही होता है, जब वो नेशनल लेवल आता है तब भी वैसे ही होता है. थोड़ा ट्रेनिंग मॉड्यूल चेंज होता है, सब्जेक्टिव होता है. जब वो नेशनल का आता है तब उसको फर्स्ट मिलता है ट्रेनिंग मेंटल टफनेस का क्लास है. तो 90% स्पोर्ट्स पीपल क्या करते, मेंटल टफनेस, क्या मेरा दिमाग खराब है क्या, मुझे क्या मानते हैं ये लोग, मेंटल टफनेस ट्रेनिंग अभी इसी क्या जरूरत है. मैं विदाउट मेंटल टफनेस मुझे पद्मश्री मिल गया. मैंने ऐसे वर्जन मिला है मुझे स्पोर्ट्समैन से, क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, कि उनका बोलने का मतलब है कि 15 साल में मैंने ले लिया, पद्मश्री मिल गया, और मेंटल टफनेस का क्या जरूरत है. स्पोर्ट्समैन का कोई गलती नहीं है. एक्चुअल क्या है, उसको पता भी नहीं है मेंटल टफनेस जब वो रीच करता है पीक में, तब जाके मेंटल टफनेस दिया जाता है. इसीलिए आज की डेट में भी मेंटल टफनेस लास्ट मोमेंट में देने का बाद भी रिजल्ट में वो शो नहीं करता है, क्योंकि सब कोई पूछता है कहाँ मेंटल टफनेस से काम किया, कुछ भी नहीं किया. लेकिन आप लास्ट डेट, कल कंपटीशन है, आज अगर मेंटल टफनेस ट्रेनिंग देंगे, आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क. सो समटाइम वी नीड टू नो, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है CPD. I hope you all know about CPD. अगर पता नहीं है, I can give you the abbreviation. Continuous Professional and Personal Development Plan. What is this all about? इसका मतलब है Continuous Professional and Personal Development Plan मतलब एक प्लान होना चाहिए, just like a blueprint. If I ask you all, ताजमहल रियलिटी में कौन बनाया था, हम लोगों को पता है, बट द क्वेश्चन इज ताजमहल शाहजहां ने कितना बार बनाया था. नॉर्मली आदमी आंसर देते हैं क्या कि एक बार बनाया था, लेकिन वो तो फिजिकली एक बार बना. लेकिन फिजिकली ताजमहल बनने से पहले ताजमहल का बारे में शाहजहां ने कितना बार उसको स्केच किया था. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. सो एवरीथिंग इज मेंटल. अगर मेंटल स्केचिंग अच्छा होता है तब जाके रियल स्केचिंग होता है, और रियल स्केचिंग मतलब वो है बाय प्रोडक्ट, रिजल्ट. रिजल्ट से पहले मेंटल प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप लोगों को जरूर So, पता Mrinal, है. if I may interrupt you, there are a lot of requests for speaking in English.
Okay. More than 80% of the participants Okay, sir. Okay, follow definitely. English, but of course Definitely. Hindi is needed. So please blend both. Thank you. Thank you. I will I'm definitely sorry for speak in English. interrupting. Yeah. No, no problem. Because previously we talked that we should talk in both languages. That's why I'm using more and No, we Hindi. should, but this is No problem. predominantly Hindi. So a lot Definitely, of sir. people are missing it. Definitely. I'm extremely sorry, those who don't understand my Hindi, but definitely we will go in English. Thank you. So what I mean to say, the meaning of CPD, this is very important point for a coach as well as for the sports people also, because sometimes we don't know the meaning of this one. The meaning of this one means, what is this? This is a compass. And what is this? This is clock. If I ask you all as a coach, when you are working with the sports people, which is more important, your compass or watch? The same question goes to the players also, that is it more important, the watch or the compass? Sometimes we use it, both are required, but which is more important? That is the more important part. We need to blueprint first. That means we need to use the compass, because first of all, if we don't know where we want to go, then how we can utilize the time? So what I mean to say about lockdown, what I did personally, I would like to share with you that day one, when it decided that that lockdown will be happening, because previously I don't know what is lockdown. Nobody know. Then immediately I decide that what will be my step, because my previous compass is totally different. I know what will be my day one, day two, day three goal. But whenever the lockdown happened, I sit myself and I ask myself, what will be my new step? Immediately, I use my compass. I put my compass in front of me, because the compass plan is totally changed after lockdown and before lockdown. And when the lockdown happened, what will be I do during lockdown with all the sports people and all my clients? I immediately use this quotation with my all client. It's a very fantastic quotation. The quotation is written there. When fishermen cannot go to the sea, they used to repair nets and prepare for future. I mean to say, sometime we need to repair ourselves, because this is a repair time, and we don't know how long we have to repair ourselves. But if we repair properly, then only we can prepare ourselves for the next jump. Like, as you all know, that when we buy a car, we need to go for servicing also. The same thing, we need to repair ourselves in a right direction, in a right way. And repairing should be, in proper repairing. So the same thing goes to with the players also. That's why I put this compass and the watch. This is very important tools. Most of the player thinking about the ghadi, that means watch. That tomorrow I will do this, day after tomorrow, day after tomorrow. But what about his compass? Most of the time they don't know how to amalgamate, how to compile these two things. So this is very important part, how to merge compass and clock together, so that it's like in Hindi we used to say do aur do kitna hota hai. Like in English, if I ask you what is the answer of 2 and 2, most of the people give answer 2 and 2, do aur do, so 4 hota hai. But if I reply that maybe it will be 22 also, like it's all about your perception, how you perceive. I never tell you to put the plus. It's your belief system. It's your past belief system. That's why you are telling it's plus over there. So it's all about your perception. Now, perception can upgrade it, like mobile software. Sometimes we need to upgrade ourselves, and sometimes we need to uninstall something. That's why research shows normally that you need to prioritize your compass as well as the watch. Mental toughness or the psychology, the mental part. Sometimes all the coaches, sometimes parents forget the meaning of this thing. That what is the meaning of delayed gratification? What is the meaning of instant gratification? The meaning of delayed gratification means you are investing your time, money, everything now, and you are waiting for a certain time, then only you will get the money or get the achievement. Like a mutual fund, like your fixed deposit in bank. In life also, in sports also, we need to go through like delayed gratification. But there is a confusion. Most of the
players want instant gratification. Like, I will apply something today, immediately tomorrow I will get the result. Normally, it will never happen in sports and in success in life also. Like, we have to understand, and the day one we should share the same idea with the parents also. But there's a lot of expectation कि मेरा बेटा को Olympic में जाना है. My daughter and my boy will become the best player of India. But immediately, right now, because I got offered with so many players, so many like parents also, कि Mr. Chakraborty, I want my son will be #1 within a year. Whatever money you need, you tell me. Whatever you tell, I can send him or her. Make him like a Michael Phelps. I told it is next to impossible. Then the gentleman say, why not? Everywhere it's happened. Why not it's happened? Then I, give the idea that how delayed gratification works. Delayed gratification ka mindset, this is a mindset, and we need to, upgrade this mindset. Like if I ask you, I'm giving some example, it's a small example, then only you can understand how it works and specifically how I work with my clients. Currently, I am working with 22 would-be Olympian, this Olympic, like 2021 Olympic, and already 7 of them already qualified. I cannot mention their name, it's a disclaimer act. After achievement, definitely I will give the name. Okay. So like there is a difference between change and transformation. Most of the players came, they want change. But the main important part, change is reversible. For 2 days, for 3 days, they become motivated. And again, they will go to the same place. Like it's a motivation, like extrinsic motivation. It's stay very temporary. And I believe in transformation, that it means like irreversible. It never come back, like coal to diamond. And for transformation, there is 2 words is very important. One is time and one is pressure. So from the beginning, day one, if we, change the mindset, transform the mindset of the players and their parents, as well as for coach also, we have to, that it's a delayed gratification process. Continuously, we have to do the same thing. We have to focus on the process. And whether we are on the focus on the process, then the byproduct, the result will become just like a magnet. Here, some point is there. It's already 30 minutes, then about 27 minutes gone. And I will definitely share with you some unique ideas, what I did with my players. You can apply the same idea. Like this time, I will show you something. When the lockdown happened, whenever I talk with the players, I'm giving real example. It's like a paradigm shift. I hope you all know the meaning of paradigm shift. Whenever I'm talking with the parents, every parent start, crying ki mera bacha kya hoga. Players also furious that what happened, sir? Tomorrow I have a tournament. What happened? Everybody is in a horrible condition. But when I share with them the same thing, that if you trust me, then only I can help you. So I tell them what is the meaning of trust. They say, what is the spelling of trust? They write it over there, T-U-R-S-T. So is it possible, or it's in presentation mein nahi hai, this is not in presentation. If possible, write the word trust, T-R-U-S-T, in a block letter. And then I told them, cut the T. Then they cut. Then I asked them, what is happening now? They told it become rust. I said, what is the meaning of rust and what is the meaning of trust? Both cannot go together. If you trust your coach, you cannot rust. Rust means the, loha mein jo jung aata hai. So if you trust your coach, you have to trust 110%, just like you have to use the flippers. आंखों में वो जो पट्टी लगा के आपको believe करना. So if you believe me, and tell parents also, if you trust me, then just follow my word. Or if you don't trust me, cut the T and thank you, goodbye, God bless you. So most of the parents say, no, sir, you guide us. Then I told them, it's a repairing time. Like for few people, it's like an aim. That means it's a miracle time, it's a magical time. You can repair yourself such a way, I repeat, such a way that you never did it. That every day, every way, you feel better and better. And if you believe that, when the lockdown opened, the day one, you become wealthy, you become unique. And only those who will be wealthy when they perform good. That means
Few people think it's a miracle time. It's a magical time. The same way, still few people think it's a waste of time. ये mental toughness time waste है. Like this time is wasting time. Most of the people in this universe are thinking we are wasting something. It's true, we are wasting, but just paradigm shift. It's a miracle time also. The first time you realize that everything can happen. First time you realize everything is unpredictable. Nothing is predictable. Sometimes we start believing everything is predictable. Whatever I want, it will achieve. But it's not like that. It's unpredictable. So in unpredictable situation, you have to make your mind switch like such a way that whatever happen, you make it in a good way. जितना भी negative हो, उसको positive way में देखना. Like, I will give you some example. Like I written over there, mindset. If you have time, go to Google, write growth mindset and fixed mindset. You will get so many different slides. It's a great book by an American psychologist. And I met that lady in Harvard University when I was over there for my research paper. And a great opportunity. You read the book of growth mindset, fixed mindset. In this universe, there is a 80-20 rule. Most of the player is like a fixed mindset. Whatever they believe, they don't want to change their belief. They believe, yes, whatever I know, this is perfect. But few of them are like growth mindset, that whatever happened, they make it in a good way and they take the positive vibes, like visualization and meditation. This is most important part in today's sports and mainly in swimming, because mental imaginary, the hypnosis through NLP. I hope maybe somebody will ask what is NLP, because NLP is not popular nowadays in India too. But first time I apply with Indian hockey, Indian archery and Indian table tennis. And people don't believe that how it will work. I hope you all know Michael Phelps. You all know Magnus Carlsen, the world best, chess player. Roger Federer, Messi, they all apply NLP. And you know the guru of NLP, Dr. Richard Bandler, and who is my coach actually. From last 10 years, I'm the student of Dr. Richard Bandler, who create NLP. So why I'm sharing this link, so that later on you can go to Google, you can learn how NLP work, how NLP can help you also. Because if you don't take it personally, if as a coach I'm not upgrading, then how I expect my student will be upgraded? Because first I need to upgrade myself, because for things to change, I have to change. For things to get better, I have to get better. That's why there is a saying, ये लॉकडाउन पीरियड में बाहर नहीं जा सकते हो, अंदर तो रह सकते हो. The meaning is you cannot communicate with others physically, but you can communicate with yourself internally. So internal connection is more important than external communication. It's my personal perception. And how many of you use vision board? I don't know you are using or not, but in today's mental toughness, this is very much required. I will show you my vision board. I'm using this vision board from last 15 years. Look at my vision board. There are so many different players featured over there. And whenever I work with the players, I tell them, give me your photograph. And I tell them, make 3 photographs. And when they give me the photograph, 1 photograph for me, like I will show you few players. There are so many different players. This is the player photograph of Ankit. Ankit Mandal, the India number 1, 15 years old in table tennis, in badminton. So whenever people are giving me the photograph, I tell them I need your autograph also. And all the players, all the budding players start laughing. Sir, autograph? Myself, I say yes. Your signature become autograph, but mentally you have to visualize. So what happened? Look at Ankit, and there is a autograph of Ankit. Like here, most of the players' autograph is here, and why I'm showing you this vision board, because in today's sports, they should think. Normal belief system, what happened, that only swimming is important. But research shows how much you practice inside waters, that is important, but it is more important outside water, how much you are become disciplined or how much you are thinking inside your mind regarding your sports.
This is more important. That's why vision board is very much required. And I'd like to request you, you can go to Google and write vision board. Then only you can understand the power of vision board. There are so many things like install, uninstall, upgrade. There is therapy called timeline therapy. And I'm fortunate, I'm a certified trainer of timeline therapist from Dr. Richard Bandler, who is the king of NLP. You can delete your past negative, things also. Like you have a negative impact in your mind that मुझे पता नहीं मुझे होगा कि नहीं होगा. Some people are thinking ये जो performer है previously I faced in or hard and I lose, but now I believe कि आज भी मैं हारूंगा. Prepared है लेकिन वो mentally become weak, mentally start believing that I can't win. So for that, you have to put a vision board as well as creative visualization. Timeline therapy can do it. Like we can uninstall some thought also from our mind. It's possible. One player asked me how it will be possible. Then I asked that when you born, did you install some habit with you the day one? No. So all the habit you cure, you install like a software. So if you install some software, then only you can uninstall some software. Sometimes you need someone like specialist, those who can help you to uninstall the software. Here are some link. If you click the link, you can understand what is the power, mental toughness training. I have 1,000 links, but I put it over only 3 links. Time is very less. That's why I don't go the link. Later on, you can click and understand the story of Betty Robinson. He's a 100-meter runner. And uska kya hua gaya tha? He got gold medal in Olympic, and after 3 years, plane crash. And all the people over there died. So those who are survivor over there, जो survive मतलब जो rescue team था, they told बेटी मर चुका है. And बेटी का body चला है mortgage में. When mortgage का जो doctor है उसने check किया तब वो alive मिला. And then after 1 year वो अपने आप को overcome करके फिर उसको Olympic में gold medal मिला. It's all about mental toughness. All the examples, Joseph Schooling, you all know about that. Arvind, you know about Michael Phelps. You can go through the link later, and I hope it will help you all. And there is a big presentation over there regarding how to focus, how success comes, focus, preparation, execution. I don't want to go slide by slide because if I go, then I cannot finish the total presentation. I make it for you all so that you can go later on. Right now, I give a demo of mental toughness, how work with the visualization process. So I'd like to request you all to do the same exercise again in a detailed way so that I can give you the real demo. Now, what you have to do, you have to close your eyes, like you sit like a straight posture. I would like to request you, if you are in a relaxed mode, possible, can you sit in a chair, or if you are sitting in a bed, take a support of the behind support. Your body should be straight, but you need to take the support, and you have to close your eyes, and if it is possible, your both hands should be in your thigh. Okay, and just close your eyes. It's an exercise of 2 to 3 minutes. You have to visualize. Okay, so please participate, then only you can understand what I'm trying to do from here on. Day one, when the lockdown happened, up to today, every day at morning 5:30, I have a session with all my students, and again evening. So I did all those things, and it worked like a magic. All the parents start changing, all the students also changing. So I'm giving some demos so that you can get the idea. Okay, so please close your eyes, take a slow deep breath, and try to visualize. It's all about how you can visualize, how you can apply the focus things. Okay, so close your eyes and try to imagine right now you're in a competition place, in a swimming competition place. Okay, just feel it. You're in the competition arena, people are shouting. You feel that you are the player. Don't think you are the coach, just feel it. People are shouting your name, okay?
and you are in the pit for the starting. Okay, just feel it. Just feel कीजिए, आप स्विम कर रहे हैं. Just close your eyes and feel it. You are swimming. आपका स्टार्ट हो गया है. फील कीजिए, फील कीजिए. Just feel it. आपका कंपटीटर भाग रहा है आपका पास. जस्ट फील इट. और आपको सुनाई दे रहा है और स्टेडियम का क्राउड भी सुनाई दे रहा है. यू फील टायर्ड एंड सडनली यू आर रनिंग, यू आर स्विमिंग, यू गिव योर बेस्ट. आप टायर्ड हो रहे हो लेकिन फिर भी आपको आपका ड्रीम समझ में आ रहा है. कैसे लगेगा आपको? हाउ यू फील? हाउ यू फील द साउंड? अब जस्ट फील करो हाउ यू विल फील. कैसे लगेगा? एंड जब सचमुच आप यू आर रियली स्विमिंग योर लाइफ बेस्ट परफॉर्मेंस. फील करो, कीजिए, फील इट फ्रॉम योर हार्ट. फील कीजिए आप अपना लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस किए हैं और आपका फैमिली वाले भी आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं. कोई लोग आ नहीं पाया क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और वहां पे अनाउंस हो रहा है नाउ रेडी फॉर विक्ट्री स्टैंड. नाउ फील कीजिए आप विक्ट्री स्टैंड की तरफ जा रहे हो एंड पीपल आर क्लैपिंग. आपको दिखाई दे रहा है आपका मेन कॉम्पिटिटर जिससे आप पहले कभी डरते थे लेकिन आज आपने विन किया है. अभी वहां पे बोल रहे हैं कैन यू प्लीज रेडी फॉर द नेशनल एंथम. कैन यू फील इट? कैसे लगेगा? हाउ यू विल फील? आपको कैसे लगेगा जब इंडिया का फ्लैग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा? आप इमोशनली कितना कनेक्ट हो जाओगे जब आपको लगेगा आपका फादर और आपका मदर स्क्रीन में आपको देख रहा है. कैन यू विजुअलाइज दैट? कैसे लगेगा जब आपका फादर मदर आपको देख रहा है, कैमरा फ्लैश हो रहा है, हर तरह से पीपल आर शाउटिंग लाइक दिस और नेशनल एंथम चल रहा है. यू फील इट फ्रॉम योर हार्ट. आपको कैसे लगेगा जब वही नेशनल एंथम फिनिश हो रहा था? पीपल विल कमिंग फॉर यू. फील कीजिए आपको क्या लगेगा जब आपका कोच आके आपको पकड़ के बोलेगा आई लव यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. आपको कैसे लगेगा? हाउ यू विल फील? कैन यू इमेजिन दैट इमोशन? जस्ट फील कीजिए आप इंडिया लौटे हो एयरपोर्ट की तरफ और एयरपोर्ट के बाहर आए हो. thousands of people are shouting like this with the Indian flag. Can you understand the emotional attachment with yourself? Yes. You look at the sky and you create like victory pose and say, yes, yes, I did it. I did it for my country. Feel the emotional attachment with the situations. This is very important part of our daily life. And if we really want to achieve a goal, we need to realize, respect always your coach, always your parents, and always your country flag. Then only you can achieve it. Slowly, 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 कोशिश कीजिए आँख खोलने का. Try to slowly try to open your eyes. Very slowly, try to open your eyes and just say thank you to everyone, whoever sitting beside you or whoever in front of you, and just feel the difference. Can you measure your heartbeat? You can. If you measure it, then you can understand what is inside your mind. So I'm just giving a small, just tips, ideas that how mental toughness and visualization work. Nowadays, in a lockdown period also, as a coach, you can do the same atmosphere. You can create the same atmosphere with your player. So things, there are so many different technical ideas I can give you. I can share with you my ideas that you can play this type of music, and you can tell them to do this thing. Because I know when I attached with swimming, with the help of Prasant,
I learned so many things from Prashant, that how, you know, psychology, how the sportsmen work, and how I can help Suez, because I don't know about swimming with that. मुझे swimming थोड़ा बहुत आता था, लेकिन I don't know about swimming things. Whenever I learn any, you know, subject, I go to the integral part. I go to the foundation of the things, and I sit with Prashant for hour and hour. And whatever Prashant give me the idea, then I learn, and then I talk with the, you know, Suez, and I work Suez for a long time. We make a slogan, and Suez nowadays also Suez apply this slogan. If you have a time, Tapan said no, Prashant no. The quotation is, don't think it's over until it's over. If it is possible, you can write it down, because ये slide में नहीं है. Don't think it's over until it's over. Just hold for a few more seconds. That's all about winning and losing. मतलब अगर आप वो last तक, the last moment is the best moment. If you know, use the thing, it will work like a magic, because everything is all about your perception. And I believe, it's my personal belief system, that if we work with from the scratch, from the day one, when the छोटा सा एक बच्चा आता है sports के लिए, that day one we can realize that it's all about here, every day, every way. If you groom this one, then only you can become a magician. Like I used to say with my all sports people, it's a game of 6 inches versus 3 inches. What does it mean? That whatever you are thinking over here, that 6 inches, and how you use your 3 inches, the tongue, that's all about your winning, and all about your learning. Because it's not about win, it's all about your learning and experience. The more you learn, the more you experience. The more you experience, the more you grow. So to grow, to enrich, to reach the excellence, always remember learning is important. Because from the day one, कोई भी छोटा बच्चा का अंदर में हम लोग डाल सकते हैं कि it's all about mental things. It's not that only chess become mental, only golf become mental, only archery become mental. Every sports nowadays, it's all about a mental game. But sometimes we don't know the mental part, you know, how it integral. So first of all, I think we all should be aware of this part. And if we apply in our own style, sometimes it work like magic. जैसे 2 और 2 4 नहीं होता, और 2 22 भी हो सकता है. Like Taj Mahal, mental creation, then it becomes physical creation. Because sometimes we don't know how to use these 3 inches. गलत कोच, एज ए कोच हम लोग कुछ गलत बोल देते हैं. मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन आज टाइम ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं. आई कैन नॉट शो द वीडियो, इसीलिए मैंने 3 लिंक भेज दिया. वैसे मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, मैं वो एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा, अगर मुझे परमिशन मिलेगा तो. कैन आई शो द वीडियो सर? Yeah, please go ahead and show some videos. Sure. Thank you. So ये वीडियो आप लोग देखिए, विल स्मिथ का वीडियो है. बाद में वीडियो में भेज दूंगा, ये वहां पे नहीं है. देखिए विल स्मिथ क्या बोल रहा है. Love this one. Fail early, fail often, fail forward. You know, it's always a little bit frustrating to me when people have a negative relationship with failure. Failure is a massive part of being able to be successful. You have to get comfortable with failure. You have to actually seek failure. Failure is where all of the lessons are. You know, when you go to the gym and you work out, you're actually seeking failure. You want to take your muscles to the point you get to failure, because that's where the adaptation is. That's where growth is. Successful people fail a lot. They fail a whole lot more than they succeed. They extract the lessons from the failure, and they use that the energy, and they use the wisdom to come around to the next phase of success. Gotta take a shot. You have to live at the edge of your capabilities. You gotta live where you're almost certain you're going to fail. The reason for practice is controlled failure. You're getting to your limit, getting to your limit. You can't lift that. You can't do that. Until you get to the point that all of a sudden your body makes the adjustment, and then you can do it. Failure actually helps you to recognize the areas where you need to evolve. So fail early, fail often, fail forward. जैसे ये failure वाला things I would like to share with you. Normally I used to say with all my clients, all my 1:1 when I work with the Olympians, I told them, you learn, you win, or you learn, you never lose.
Don't think about losing. It's all about learning. Whenever parents come and say, "Sir, मेरा बेटा loss किया," मैंने बोला कौन बोला loss किया? Which is more important, learning important or हारना important? Learning. So go for learning. The more you learn, AL जो है वो हट जाता है. It's convert into earning. Earning not means money. Earning means knowledge, experience. The more you experience, the more you learn. The more you learn, the more you grow. Definitely, I will show you another video. Can I get a chance, sir? Partho sir? Or Please Monal go sir? ahead. Please go ahead. Thank you. मैं और एक वीडियो दिखाना चाहूंगा so that you can understand the communication skill with the student. There is two parents over there. How they communicate with their child. Now you have to take your adaptation, your repattern procedure. देखिए दोनों फादर बच्चे के साथ कैसे बिहेव करते हैं और ये बड़ा बात होता है एक स्टूडेंट कोच का रिलेशनशिप में. One dad is positive. देखिए. Yeah. Let me call you back. So let me see that report card, son. C's? You got C's? How dumb are you? Obviously, you didn't try as hard as you can. The next time you bring back one of these, it better be straight A's. Do you understand me? Yes, Dad. Now go to your room. Look how Kid. he behaved. Hey, bud, let's take a look at the report card. Cute. But, C's. How did this happen? How can we do better next time? Tonality. Maybe we can work on reading a little bit more? Okay, that's the spirit. I know you didn't mean to get these bad grades, but I know you can do better. How about we work together on your homework this time? Okay, and less playtime. Deal? Deal. All right. Look, feedback, appreciate. That was a 10 loss. 10 years later. I'm sorry. Yeah, I mean, Dad, I just feel like I let everybody down. Hey, the point of making mistakes is to learn from them. We all have moments like this. Don't be too hard on yourself. What do you say we go over the court by our house where we work on some of the plays so you're ready to go next time? I think I'd like that. All right, let's do it. Let's do it. What kind of play was that, son? You're embarrassing everyone out here tonight, including me. Are you gonna cry now? No, sir. There's no time for that. You need to be a man. Now I want you to go get your stuff. We're gonna go over to the court by the house, and I'm gonna show you exactly what you did wrong. Now go get your stuff. Thank you. I love that idea. Let's grab lunch next week and talk more about it. Okay? I enjoyed it too. I gotta go. Can I call you back? All right. Thanks. Hey, Dad, you got a sec? Of course. I got all my college letters back. Great. Let's take a look. Awesome. Okay. We knew these ones were gonna be tough, anyways. Yeah, but I at least got into the state school. That's fantastic. Yeah, congratulations. Thank you. So proud of you. Thank you. It's not exactly what we wanted. No, it's not. You know what the great thing is? You can work really hard for the next couple of years. If you still want to reapply to an Ivy League school, we'll try to transfer that. We got this. I'm proud of you. Thank you. Yeah. Dad, hey, what's up? Just got my college letters back. Sweet. Let's check it out. See what we got here. Oh, it's horrible. Dad, I got into the state school. Like that's some big accomplishment? You should be in an Ivy League. Here, take this. We're gonna get back to work. Yes, sir. You know, you really should start to try harder. Come on. We've all been in one of these positions, or we're doing one of these to our kids today. It's common to parent the way we were parented, or to avoid that style because we saw the negative sides of it. Right. Expecting our children to perform at everything all of the time is a recipe for disaster. There is no one who can genuinely excel at everything all of the time. Let them fail.
Let them learn how to pick themselves up and support them. Let them make mistakes. Let them learn how to rectify them and improve. Don't confuse punishment with discipline. Condemning or punishing kids makes them experience pain for a mistake. Discipline is teaching them how to avoid that mistake in the future. There's no need for a parent to throw a pity party or be encouraging when their child does something wrong. But at the same time, it's so important that we realize that condemning or putting them down doesn't work either. Don't expect a perfect report card, even if you had one. Let your child express themselves, not be forced to suppress themselves. Let them become who they want to be, not who you want them to be, or who you want them to be. Thank you. I would like to show you one thing. This name of the book called Road to Olympic. I have like 3 books like this. When I am working with the Indian hockey team, men's team, one day Rani Rampal came to me at 2014 when I am working with the table tennis team. And Rani Rampal shared me, I hope you know about Rani Rampal, that Mrinal sir, and she started crying a lot. And she told me, sir, I want medal, and without medal I cannot survive because I am coming from very poor family. So I already understand the main part. She is very connected. Then I apply the formula called yes but. I never criticize any sports people nowadays or previously also. I say yes, you are good, but when I apply that yes but formula, it will work like a magic. So I give this book to Rani as well as Indian hockey player, and whoever working with me. It's a 365 quotation is here. Every day you read one quotation. It's like a tablet. It's like a mindset. It's like a shield for you for the day, and apply the same things every day. As you all know, if you go through Suez profile in Asian Games, he got 5 medals. And if you ask directly with Suez how mental toughness work, nowadays also Suez applying all the formula line by line, and the credit goes to Thamsar as well as the Prashant. Because Suez, Suez नहीं था, when nobody knows about Suez, then only we start working on these things, and it worked like a magic. And I think my time is over. So there is a huge presentation. It's all for you all. You can go to the presentation, and later on, if you want my help, you can email me, and my phone number is also there. So thank you. If you ask me something, or like Partha sir, Monal sir, can you take all the question answer session? Sure, we will do it. Thank you, Mr. Mrinal, for your wonderful presentation. Thank you. Thank you. You can remove the slide if you want, so that. Yeah, sure. Thank you, Mr. Mrinal, for taking us all through a journey of emotions, I would say. Yeah. And I'm sure all the coaches present here, I can read the comments that they have been really enjoying what you had to share today. At the same time, Partha, before we start the question answer, the small man ki baat, as I can say. चूंकि बहुत सारे लोग हिंदी और इंग्लिश की बहस इस सेशन में चैट ग्रुप में करते रहते हैं, तो ये मन की बात में हिंदी में बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग इंग्लिश से चैलेंज फील करते हैं वो लोग ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि सेशंस हिंदी में किए जाए. आप सबसे एक मन की बात ये शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मृणाल जी ने कहा CPD, उसका मीनिंग है कंटिन्यूअस पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. तो ये आपके एथलीट्स को अप्लाई नहीं करता, आपको भी अप्लाई करता है. और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इंग्लिश सीखना भी एक आपके लिए एक जरूरी स्किल है एज अ कोच. क्योंकि अगर आप हमारे स्पोर्ट जो ग्लोबल स्पोर्ट है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और मृणाल जी जैसे एक्सपर्ट्स हैं हमारे देश में, बट फिर भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और बाकी टेक्निक वगैरह में बहुत कुछ सीखना है. अगर कोचेस को आगे बढ़ना है और कोचेस अगर माध्यम है स्विमर्स को इम्प्रूव करने के, तो कोच की कंटिन्यूअस पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इंग्लिश
भी एक उनके टूल किट में आना जरूरी है। फ्यूचर एजुकेशन कोर्सेज और कोचिज अपग्रेडेशन कोर्सेज में जो भी इंग्लिश और फॉरेन स्पीकर्स आएंगे वो आपके लिए हिंदी सीख के नहीं आएंगे। आपको अगर सीखना है तो आपको साथ साथ में इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि आज से ही ये सीपीडी अप्लाई करें, क्योंकि आपके लिए बेटर है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेटर रहेगा, स्विमिंग के लिए बेटर रहेगा। थैंक यू। पार्था, कैन वी गो अहेड? Yes, thank you so much, Manoj sir, for your Mann Ki Baat, and I totally agree with that. I think for the development of your swimmers, and since swimming is a global sport, and if you look anywhere in the world, all the top coaches are also adopting the common language internationally, which is English. And one of the reason, even I met some of the Chinese coach back in Australia a few days back, and I saw that he's also trying to gather this new language for him, which is English. And the reason is the communication and understanding more things from outside, from different part of the world. It will help you, and you can also convey the same thing to swimmers and get your toolbox bigger. So we'll start with the first question, Meenal sir. Some swimmers perform well in the heat, but when it goes to final, they get the anxiety, they get the nervousness, they keep going to toilet, their body getting stiff, tension appears. As a mind trainer, how you're going to tackle the same? Yeah. It will be nice if you can just remove your presentation, then people can see your face. So, like, is it now okay? Nikita, थोड़ा support दीजिएगा. Sir, you can just click on stop share at on the top of your screen. Okay. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Thank you. So definitely, it's a very interesting question, and I can give you unique ideas. What I learned from the Cambridge rowing team. I am attached with Cambridge rowing team. I hope you all know they are very famous in rowing. Cambridge and Oxford is like a derby match for them. So I met one player over there who is an Olympian and is Olympic medalist. He told me that, Mrinal, always remember there is a unique skill about that competition and the practice. Few players work like a competition day is equal to practice day. Like if you really want to become an achiever, you can write it down. It's not in this ये आपका मतलब slide में नहीं है. You can write it like practice day is equal to competition day, or competition day is equal to practice day. You have to go for one either other. That means you have to teach the player that you have to behave like practice day. The same behavior you can do it in competition day, or else you can switch it. Like you can, that competition day, how you behave, every day you think it's a competition day, so that you can prepare your mindset such a way. That's why I make some, music therapy. Whenever I'm working with the swimmers, I make it. I make, swimming small, like 2 minutes to 3 minutes, one imaginary. It's only music with a the practice sound or something like that. And whenever that person come to the practice time, you have to listen. And mentally, he already boosts up his total energy. And when he went to the practice arena, he behaved like a match temperament. So if any player from 365 days used to take this thing as a match day, match day, match day, match day, match day, then when the real match day comes, they behave like a practice day. Or the opposite way. Like if you go to the life of Usain Bolt, whenever the competition comes, Usain Bolt is very, focused. And if you ask with Michael Jordan, the basketball player, he's doing something else. Michael Jordan, when the competition day come, he doing such majak, doing baatcheet, kisi ka piche lag gaya, trying to joke. So he make himself totally light zone. So it's depend player to player, which will be good for him, his pattern. As I told, sometimes we need to repattern ourselves. So that player should be choose one thing. That practice day is equal to competition day. Then every day you have to maintain the same, or else match day become practice day. It's like a ritual. It's one day magic is not there. Every day you have to practice that, and then only it will be applicable. Thank you. Thank you. There's another question by someone.
what is the purpose of hypnosis in our sport, and Okay. how does it help? Okay. And does it help only elite swimmer or junior swimmers also? Very good, and thank you for this question because I love this type of questions. It's my personal perception. Hypnosis in today's sports is very, very required because in mainly India, most of the players have their mindset ki A is equal to B, so B should be is equal to A. And they don't want to come out this from mindset कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा. मतलब ये मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, if practicing in Calcutta से इंटरनेशनल नहीं बन सकता. मुझे इंटरनेशनल बनने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा. I'm just giving example. और इंटरनेशनल बनने के लिए वो कोच का पास ही जाना पड़ेगा. So the thing is, hypnosis can help everywhere there is a water. Water is your main friend and water will be your main दुश्मन. तो आपको अगर बीट करना है, जहां भी रहो, आप खुद को बीट करो. खुद को मतलब every day you have to beat your past so that you can make your new version. Whenever you go to your practice, you just take a target. Today I have to break my own practice, like process time, like process. ये नॉर्मल बोलने से, कोच बोलने से प्लेयर हाँ 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 करेगा, लेकिन पानी में उतरने के बाद सब बाहर चला जाएगा. जैसे पानी सब धो देता है, उसका दिमाग का अंदर बिलीफ सिस्टम को भी धो देगा कोच जो बोला है. जैसे साबुन लगा धो देते हैं. The same thing can happen, but only hypnosis make it internally. Like as I told you, as Monal sir shared, it's the emotions. When I play national anthem, when I play the music, when you feel that your parents are in front of you, when you feel already आपका blood circulation level बदल चुका है, क्योंकि मैंने आपका वो सब न्यूरोट्रांसमीटर को ऑन कर दिया जो शायद सोया था for a long time. And if you really listen this type of voice every day, your unconscious mind become repattern. As I told you, that unconscious mind, like a less is more. It's like a coronavirus. You cannot, understand the power of unconscious mind. It's a sleeping giant. But you have to know how to tap it. Like, हम लोग FM सुनते हैं ना, so how we can listen to FM? We have to connect the right button. जब तक वो right button में tune नहीं होता, तो exactly 93.3 का जो voice है, वो सुनाई नहीं देता. If it is 94.1, तो साउंड कैसा आएगा, ची चू पापू, बहुत सारा साउंड आएगा. So you have to connect. So as a mental trainer, as a hypnosis expert, I can apply this thing with everyone. I apply it with an Indian hockey goalkeeper Krishna Thapa. I am giving a real example. कृष्णा का फादर का डेथ हो गया था और उसका नेक्स्ट डे लंदन टीम जाने वाला था और वो कृष्णा का फर्स्ट ट्रिप था. रात 9 बजे खबर आया उसका फादर नेपाल में था, डेथ हो गया. उसका मदर पहली डेथ था, मदर नहीं था, फादर का डेथ हो गया. अभी उसके पास एक ऑप्शन है, उसको नेपाल जाना है, फादर का जो काम है वो करना है, और एल्स इंडिया टीम का साथ जाना है. तो हरिंदर सर मुझे 9 बजे बुलाया रात में, बोला मृणाल तू आज उसका पास जा और उसका साथ बातचीत कर. एंड आई स्टार्ट टॉकिंग विथ हिम. एंड वो पूरा फ्रीज था, वो बात नहीं कर रहा था, मतलब एक जस्ट लाइक ए स्टैचू इज नॉट मूविंग. देन मैंने उसको हिप्नोसिस पे ले गया. मैंने कुछ म्यूजिक चलाया पहले, सोना उसको मैंने बोला तू सो ले आधा घंटा, तो उठ जाएगा. और मुझे पता था उसके मतलब वो आधा घंटा में क्या करूंगा. और उसको मैंने पहले नॉर्मल म्यूजिक चलाया, नॉर्मल एक जस्ट स्लीपिंग म्यूजिक. और स्लीपिंग म्यूजिक देने के बाद उसका ब्रेन में बीटा फ्रीक्वेंसी निकलता है जब हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाते. कंपटीशन का पहले ना हर प्लेयर का फ्रीक्वेंसी लेवल ऐसे ऐसे होता है, उसका बीटा फ्रीक्वेंसी निकल रहा था क्योंकि वो स्टक था. मैंने अल्फा फ्रीक्वेंसी में ले गया. If you really want to learn about beta frequency, alpha frequency, you can write. It's a very unique tools. If you understand, it will apply it for yourself also. You can switch your mindset also, First, you need to learn how to switch. Then only you can teach the same thing with your students, right? So, beta frequency to alpha frequency. So, I play some music and I use some, specific tonality and specific word. And it's all about the software installation. And then slowly I make him in a true situation. I make like, look, there is a 2 screen. In one screen, your father is over there. And in other screen, your father is inside you. So which is more important? You need to go to, go to your father's, the other thing. Yeah, you need to take your father inside because आपका mother अंदर में है और father भी अगर अंदर में आएगा. For example, आपका एक आँख, ये सब मैं hypnosis पे किया. एक आँख father है, एक आँख mother है. तो आपको कैसे लगेगा? और जब उसने थोड़ा बहुत वो ड्रीमी स्टेज में था, तब उसने आंख खोला, तब जाके उसने बोला नहीं सर, आई डिसाइडेड मुझे इंडिया टीम का साथ जाना है.
मैं बोला श्योर, बोला हाँ, एंड देन मेक इट हिस्ट्री. आज की डेट में कृष्णा थापा इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर थ्रू आउट द इंडिया. द सेम थिंग विद द हरमन सिंह हॉकी प्लेयर. उसका सेम चीज होता था. उसका गुस्सा आ जाता था, मतलब बाहर से बोलने से गुस्सा आ जाता था, कोच के ऊपर गुस्सा आ जाता था, या कोई टैकल कर दी तो गुस्सा आ जाता था. इसलिए वो आपको पता है जो ड्रैग फ्लिकिंग है वो गुस्सा से बॉल बाहर चला जाता था. सो आई मेक इट दैट एंगर इनटू बिलो स्टेज. तो ये पॉसिबल है. आई कैन गिव सम एप्लीकेशन ऑल्सो, बट अभी तो टाइम नहीं है. नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल गिव सम एप्लीकेशन फ्रॉम हियर ओनली. यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, as per your view, how important is coaches' mental toughness? As coaches has to go through various responsibilities Thank you. and challenges day to day. Yeah. And what are the strategy for that? Okay. The first strategy. कैसे coaches अपना mental toughness को build करेंगे? Yeah, it's a very, very important question, and this is the most important part. That's why we are saying we need to know about Chinese bamboo tree. You heard about Chinese bamboo tree? Chinese bamboo tree क्या है आप लोगों को पता है? For 12 years the tree is like that. You can write Chinese bamboo tree, learn from Chinese bamboo tree. You can write this word Chinese bamboo tree, go to Google and learn about Chinese bamboo tree. 12 साल तक इतना हाइट रहता है, and after 12 years वो ट्री एक दिन मतलब within a month it's become 30 feet. सवाल क्या है, वो जो ट्री है ना वो 12 साल तक इतना हाइट में रहता है. एक्सटर्नल ग्रोथ 0 है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ वेरी हाई है. इंटरनली वो रूट बनाता है, फाउंडेशन बनाता है, और तब जाके 12 साल का बाद वो उतना बड़ा होता है, ट्री को कुछ नहीं होता. व्हाट इज द मैसेज? मैसेज इज यू हैव टू गो द फॉर्मूला कॉल लर्न, डू, टीच. यू कैन राइट, इट्स अ साइकिल, it's a circle. Learn, you can write learn, then dash, do, then that teach. I'm sorry to say, don't take it personally, anyone, please, बुरा मत मानिएगा. इंडिया में मैंने देखा लर्न टीच फेवरेट है. लर्न टीच मतलब यूट्यूब में कुछ डाउनलोड कर लो, हाँ कल से वही बोलने लग जाओ. आई एम सॉरी, हाँ बुरा मत मानिएगा, ये हर जगह पे ये है. हाँ मैंने सीखा, ये किताब पढ़ लिया, कहीं पे एक किताब मिल गया या कोई पेपर मिल गया, हो गया यहाँ पे डाउनलोड, और फर्र बोलने लग गया. लेकिन वो कैसे अप्लाई होता है, वो कैसे खुद के ऊपर अप्लाई होगा, वो नहीं होगा तो इसका मैक्सिमम रिजल्ट नहीं आएगा. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, लर्न मतलब you should learn and then do it for yourself for certain time, and then only you can realize which is more important application of these things. As I told you before, makeup and knowledge दोनों का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मेकअप अगर अप्लाई नहीं करते उसका वैल्यू नहीं है. नॉलेज भी वैसा है, अगर आप अप्लाई नहीं करते उसका वैल्यू नहीं है. नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करना है खुद के ऊपर. अगर खुद के ऊपर अप्लाई करते हो तब जाके आप स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते. यस सर. Kunal sir, would you like to point out few questions? Sir. Yeah, thank you, Partha. So people have a request that can you tell them about some visualization or meditation techniques for age groupers, particularly because the younger children mind are very restless and they are less able to focus. Yeah. So if it is possible, it's not in the slide, you can write. First of all, we can go for some breathing technique and watch technique. Watch technique and breathing technique. Those who are kid or those who are budding player like below 14, 15 or 12, you can give this exercise and you can play the game like this. Normally breathing pattern को ऊपर बात कर सकते हैं. Say for example, tell them box breathing. You can write box breathing. You can make a box. Make a box and put 5. It's like this. हर तरफ 5 लिख लीजिए. You just write 5, 5, 5, 5. What is this? So you have to say, तो बॉक्स बोलने से वो विजुअलाइज कर पाएगा. Tell them to close their eyes and use stopwatch. As a coach, you can use this stopwatch. Then tell, inhale for 5 seconds. So you tell up to 5 seconds, you have to inhale. When I say exhale, then only exhale. When I say stop, you have to stop. So it will work like inhale. You stretch your voice up to 5 seconds. Say inhale. Then
Immediately after inhale, say hold. Then exhale. Then again hold. Matlab first inhale, then hold, then exhale, then hold. You understand my point? Inhale, hold, exhale, hold. This is one technique of breathing. ये जो restless है ना, ये ठीक करने का अच्छा तरीका है. It's a very unique technique. और एक टेक्निक है स्टॉप वॉच या घड़ी, जो एनालॉग घड़ी है, उसमें जो सेकंड का कांटा रहता है, सेकंड का जो वो होता है, स्ट्रिक होता है ना, that you have to say first you apply for yourself, then only you can understand how difficult it is and how easy it. What you have to do, आप वो जो सेकंड का कांटा है उसकी तरफ देखना है, and you have to look for 2 minutes continuously, and in this 2 minutes don't try to stop your mind. आप माइंड को थोड़ा छोड़ दो, अटेंशन मत दो, देखो कितना सेकंड तक खाली ये कांटा के बारे में वो सोचने लगे. हाउ लॉन्ग यू कैन कंसंट्रेट ओनली ऑन द कांटा, मतलब द सेकंड थिंग्स. और एक चीज है वो है मेनली साउंड. जो साउंड है उसको फील करना, वाइब्रेशन. लाइक यू कैन स्टॉप द थिंग. ये जो कान का जो पोर्शन है, इसको ये जो हाँ समथिंग लाइक दिस, यू हैव टू स्टॉप इट. और स्टॉप करने का बाद आपको प्रोनाउंस करना है आम, लाइक आम, AUM. So how you pronounce like this for 5 times, make it 10 times also. I will show you 3 times, okay? Like this, it's a stretch like this. You have to stop it like this and then you have to do it for minimum 5 times to 10 times. I would like to request you, after completed the webinar, you just do it for yourself. Just sit straight and just stop, this कान में पूरा ऐसे डाल दीजिए so that बाहर का sound ना आए, and ये हाथ को ऐसे रखे, you make the sound. You feel the vibration over here. And when you open your eyes, you feel internally you become so calm कि बाहर का कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं देगा. सुनाई भी देगा ना, slowly सुनाई देगा. I have so many different, videos regarding this, but due to time I cannot show you. I can tell you one thing also. It's a very unique technique for elite class as well as for the, the budding players. It's technique called slow, slow and slow. You can write slow, slow and slow. इन बच्चों में हम लोगों को हिंदी मूवीज में दिखाई देता था ना, स्लो मोशन, द हीरो इज रनिंग, स्लो मोशन, लाइक बच्चा है, नायक जो एक्टर है वो भागता है और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है. सो दिस थिंग्स यू हैव टू विजुअलाइज इनसाइड योर माइंड. लाइक फॉर 3 minutes you have to play some music and you have to visualize your throughout the day in a slow motion picture. Slow motion means early morning, आपका नींद खुला, and you slowly, stand, just like a slow motion, just like a robot, and you are walking, like you have to visualize, you have to walking very slowly towards your, brushing your teeth, and then you go to the swimming field and coach tell you, are you ready? You have to think this thing, very slowly, slow motion mein ho raha hai. And you can enjoy it also. As a coach also you can enjoy. Then you are saying, yes, I am ready. Then your coach tell the same way you have to jump. Now you have to visualize of slow motion mein aap ja rahe ho. So before doing that, you can take a video shoot of yourself as a student. Yeah. And then play the same thing in slow motion. You understand my point? तो वो slow motion में आप खुद को देखो कैसे देखने में लगते हैं. So then slow motion में आप पानी के लगते हैं, पानी छिटकता है, आप slow motion में करते हो. Do it for 3 minutes. You will feel amazing, And after that आपको लगेगा everything ऐसा ही slow में चले. I will be happy. Time भी slow हो जाए, time भी stop हो जाए. You can use it, It's a wonderful feeling. Anything more, sir?
Thank you. That was very interesting. There is a coach who's saying that they've heard a lot about your NLP practice in Tata Jamshedpur. Can Yeah. you explain a bit about the NLP Yeah. a little Yeah. more? Definitely. Like Monal sir ने ऐसे क्वेश्चन पूछा, महाभारत आप 30 सेकंड में बोलना है, something like that. It's really, sir. Thank you, sir, for giving the opportunity. NLP, it's really unique. The main part of NLP, you have to understand the word called NLP. It's neuro linguistic programming. What is neuro? Like how you think. So neuro, then linguistic, how you speak, how you use the tonality, and the neuro-linguistic programming. The programming word coming from the computer, how you program your mind. Like if you program something, you can reprogram something, right? So how NLP work? NLP always work in two things. First, you need to understand your pattern. How you understand your pattern? I'm showing you something. Thank you, sir. I will show you. Then only you can understand what I mean to say. So this is the pattern, this is the pattern, this we can change this pattern also. Like if I pressure it, it's make like this, or if I pressure it, we can make like this. So as a coach, sometime you can buy this type of things, इसको क्या बोलते हैं, वो change वाला होता है, and you can show to the player that sometime you need to become a great player, you have to pattern yourself. Everybody has their pattern. So NLP is all about what is your pattern. First of all, you need to know your current state. Where are you staying over here? And you need to know your desired state, where you want to go, like compass, I told you before. So if you really know where you are here and how you reach over there, you have to make a bridge. Like there is a river and one side of the river you are sitting and you need to go other side of the river. So you need to make a bridge or make a small ship or koi boat aapko lena padega. So this NLP is like that. NLP will make the bridge. Like you need to repattern yourself. So how you can repattern? You need to you have to understand the pressure and time. So how NLP work? You need to share with them that NLP is all about, are you willing to transform or not? Transformation. So how NLP work? You need to learn about the most important part, that is responsibility, responsibility. So what is the meaning of ability? You all know. What is the meaning of response? You know. So it's connected with your emotional things. As you all know, emotions, that means energy in motion. You can write this word. It's a very unique word, energy in motion. And NLP help you to secrete, that happy hormone. You all know the happy hormone. Which is happy hormone? The serotonin, oxytocin, dopamine. And when you control your all the hormonal secretion, then you can reduce the cortisol level. It's very, technical things. बहुत बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ. You need to learn how to improve your happy hormone and how to decrease the cortisol adrenaline secretion. So for that, I will give you two examples for coaches and the players, that how you can apply NLP in your daily life. Whenever you go for practice, stand in a Superman pose. It's called Superman pose. You all know. You have to stand like a Superman. Look at any hero. Look at any champions. They stand like this. So first of all, you are adapting something. How champions behave. Champions behavior. Like as we know, to behave like a champion, then only you become a champion. To behave like a rich people, you have to think like a rich people. Then only you become rich people. So first thing is mental over here. One is universal victory pose. You can write it over there. Universal victory pose. Before going to practice, it's an application, instant application, You have to stand like this. You have to look like this. There is a research going on. Those who are blind, जो blind जिसको दिखाई नहीं देता, उसको पर research किया गया था कि how these two things applicable over there. Most of the time देखा गया है उन लोगों को पता ही नहीं है victory pose क्या है, लेकिन when they achieve something, they also doing like this. Look at any cat, look at any dog. When they are furious, they expand their body posture. When they are fighting, look, their posture is like that. So that means when you do your posture like this,
आपका बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस है वो मैजिक की तरह शिफ्ट हो जाता है। यू बिकम मोर मोटिवेटेड। अब देखिए स्विमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर ए मैच्योर कोच, डोंट टेक इट अदर वे, जस्ट आई एम टेलिंग, इफ यू आर वेरी मैच्योर कोच, आप प्रैक्टिस मतलब वो जो स्टार्टिंग जोन देख के आप बता देंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, ड्यू टू द बॉडी लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हारने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, ग्राउंड में ऐसा, आपको पता है मैंने ऐसे बहुत रिसर्च किया, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस है सुरेश का, ये बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, मतलब वो ग्राउंड में ऐसा है, देख के ही पता लग गया हारने से पहले वो हार चुका है, वो खेलेगा क्या, वो स्विमिंग क्या करेगा। आई मीन टू से इफ ही आर्टिफिशियली आल्सो डूइंग शोइंग दिस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वो उसका बगल में जो है ना वो डर जाएगा। तो समटाइम ऐसे स्विमिंग में हुआ है, चेस में बहुत होता है, इफ यू डोंट नो योर ओपोनेंट क्वालिफिकेशन एंड यू गो फॉर स्विमिंग, यू कैन क्रिएट हिस्ट्री। आप उसको ऐसे ऐसे बोल के हराते हो, और जब आपको पता है अरे उसने नेशनल रिकॉर्ड किया लास्ट टाइम, उसने उसको हराया, तो आप हारने से पहले आपको पैनिक होता है और टॉयलेट की तरफ जाना पड़ता है, पानी की तरफ नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। सो यू हैव टू, ये सब प्रैक्टिस है, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड है, ये कोई किताब का थ्योरी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट थ्योरी बेस्ड पीपल। वट एवर यू आस्क I give the practical application, immediately it will work like a magic. But only one day never give you success. It's a continuous process. धीरे धीरे वो दिमाग में जाता है। मेरा पास एक फादर आया था and he told me, I will pay you 2 lakhs rupees. Make my child international. I say, I cannot. If you pay somebody else, they will do for you. I cannot do it for you. Because the money is not the thing. I need time. I need to transform. First, I need to transform your attitude, because problem is your attitude. You want instant result. So how your kid become change? You understand my point? So it's a delayed gratification and instant gratification can mix and match. Thank you, Monal sir. Anything more? Superb. I think we'll take the last question here. Yes, I think so. Yeah. There is a question on frequency of mental training sessions for athletes. Should it be once a week, every day, once a month? Thank you, sir. It's totally depend on his or her mental state as well as his or her parent state, because we have to understand the root. वो बच्चा कहाँ से आ रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो जहाँ पे रहता है उसका आसपास पे क्या है। मुझे पता है आज की डेट में भी मैं दिल्ली का कुछ स्विमर का साथ काम कर रहा हूँ। आई डोंट मेंशन देयर नेम ड्यू टू देयर प्राइवेसी एज वेल एज फॉर देयर गुड डेज। मैं उसे पूछा आपका डेली रूटीन क्या है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स रूटीन है स्विमिंग एंड स्लीपिंग, इस बोथ आर एस, बट देयर इज नो एस अबाउट स्टडी। दिस 3 A's is most important. Swimming is important, sleeping is important, study is important, but there is no study. मैं जब भी पूछूं कि पढ़ाई करता है, नहीं सर पढ़ाई का क्या जरूरत है, वो एक दिन पढ़ के हम दे देंगे। तो ये एटीट्यूड जो है एक दिन दे देंगे इंस्टेंट पढ़ाई में, और वो सोचता है पानी में वो एबीसीडी करेगा, सोएगा और लाइफ बदलेगा। आई डोंट नो इट पॉसिबल और नॉट। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द प्लेयर। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, मैं कभी भी किसी के साथ काम करता हूं, आई नीड टू अंडरस्टैंड हिम और हर फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू रीड हिज और हर माइंड इन माय ओन माइंडसेट। When I understand him or her, then only I can suggest that how frequent. It's totally on the case-to-case studies. Thank you. Fantastic. And we have been getting some requests here. कि मृणाल sir को दोबारा एक session में लाओ. Lot of questions, so hopefully we shall do it sometime very soon. Thank you, sir. But thank for you. the moment, thank you very much for an excellent session, helping a lot of people with your thoughts. Thank you. And yes, I really appreciate the way you have conducted the class. I think the video, and I hope we would have got more time, but of course there's a limitation in time always. Right. But we can see from the message box that your session has been appreciated a lot. Thank you for your wonderful thought sharing. Thank you towards this thing. Yeah, would you like to say something? Yeah, thank you again for your most valuable thing, that is time. ये वर्ल्ड में ये बहुत कीमती है, और ये टाइम आप लोग मेरे लिए हम लोग एक साथ बिताएं। और एक चीज I would like to share. Immediately you have to learn something about NLP. You can go through my Facebook page and my Instagram page. Every day what I did at 5:30, I make a rule. If you want to work with me, you have to train hard, smart hard. I need hard training as well as smart training. Whenever I ask with the player, how many of you know about smart? So everybody says smart means a hero look. I say no. Smart means there is an abbreviation of
SMART. That means specific, measurable, achievable, realistic, time bound. SMART. So it's आप लोगों को पता है ये स्मार्ट का मतलब क्या है. So what I did every day 5:30 you have to report through Facebook Live. So 45 minute का सेशन होता है. मैं होमवर्क देता हूँ and then again 5:30 5:15 इवनिंग में सेम एक क्लास होता है. तो वहां पे more than 1000 people every day join to motivate them or to take my support. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है मेरा सपोर्ट चाहिए इन द मीन टाइम कि एसोसिएशन या साई अरेंज करे, आप रेगुलर बेसिस में मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल मोनाल सर, थैंक यू पार्थो सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, तपन सर फॉर योर सपोर्ट, एंड स्विमिंग को जानने के लिए प्रशांत एंड सुरेश, इन लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि आप लोग मेरे लाइफ में अगर इस टाइम में नहीं आते मैं शायद ऐसे आप लोगों के सामने नहीं आ पाता. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. It's our pleasure to have you here today. So with that, Nikita, have a Nikita good day also to arrange to all this. everyone.